Hi guys, what's up? I hope everyone is doing absolutely fine. So today we are going to discuss a very important concept of climate change, and we have covered 15 classes till now. Yes. So by the way, my course is launched. और काफी लोग परेशान हो रहे थे इधर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ी सर, करंट अफेयर सर, मैं हिंदू पढ़ा ही नहीं सर, हमारे यहाँ तो आता ही नहीं है सर, कभी देखा ही नहीं सर, कभी सुना ही नहीं, नाम ही नहीं सुना। योजना सर छपती ही नहीं है, कुरुक्षेत्र तो सर बैटल हुआ था वहां, तो महाभारत का पता ही नहीं है। ओके। सो ना हिंदू पता है ना योजना पता है, योजना तो कभी बता ही नहीं सर, कभी स्ट्रैटेजी तो बनाई नहीं एग्जाम के लिए। तो ना योजना है, ना कुरुक्षेत्र है, ना हिंदू है। तो उन सभी के लिए जो उन्होंने लास्ट कुछ 2 साल में कुछ घास काटी है अपनी लाइफ में, यूपीएससी ढंग से तैयारी नहीं करी है, उन सभी के लिए मैंने गर्मा गर्म कोर्स लॉन्च किया है। सो दिस कोर्स विल बेसिकली cater to everything under the sun related to current affairs. We will have 2500 plus MCQs, and have all of you enrolled in that because you are already part of an academy plus. You don't need to do anything extra for that. Just enroll in that course, and rest I will take care of it. Okay. सो उस कोर्स को मत भूलना। आई थिंक 7 फरवरी से वो चालू हो रहा है, और उसमें हम 60 घंटे पढ़ाई करेंगे। अभी तक का मेरा सबसे बड़ा कोर्स है ये, सबसे बड़ा कोर्स आज तक का जो मैंने लॉन्च किया है अकेडमी पे। 60 आवर्स का कोर्स है, ठीक है, समझ में आ रहा है सर? 60 घंटे का ये कोर्स है, और यस, सो लेट अस सी। और उसमें भी 2-3 डाउट सेशन होंगे, तो 63 आवर्स का। तो आज तो हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्ग्यूबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंटायर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इज क्लाइमेट चेंज एंड इट्स मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। ओके, सो उस सब में एनरोल कर लेना, क्योंकि फिर बाद में मत बोलना मैंने कोर्स नहीं लिया। सिर्फ आपके कहने के चक्कर में वो बहुत सारा उसमें एफर्ट भी बहुत ज़्यादा जाएगा। ओके, बिकॉज कंटेंट हैज़ टू बी लाइक रियली रियली गुड। ओके, तो चालू करते हैं फिर विदाउट फर्दर अड्यू। सो concept of climate change, very 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 important class indeed. All right, so climate change, causes of climate change, global warming potential, measurement of climate change, that is what we are going to discuss today. Again, I'm barking like a dog. If you have not enrolled in that course, I am sharing the link right now. So it is a comprehensive revision, everyone can enroll it. Can you see 2500 MCQs comprehensive current affairs revision from April 2018 to April 2020। बिल्कुल 30 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स करा के छोड़ूंगा आपको। ऐसा नहीं बीच में साथ छूट जाएगा अपना, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ के आऊंगा वहां तक, एंड तक, ठीक है, यूपीएससी के, क्योंकि फर्स्ट में से एनी में वो प्रीलिम्स में आएंगे नहीं। तो 30 अप्रैल 2020 तक के करंट अफेयर्स में कवर करा के जाऊंगा, ठीक है। So if there are your friends and families, because still like almost 3 months are left in that course, तो अपना रिवाइज कर लेना, क्योंकि उस कोर्स में हम बिल्कुल तूफानी स्पीड से चलेंगे। ओके, वी विल बी सुपरसोनिक। सो क्लाइमेट चेंज, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ओके, हाँ, दिस इज द फायदा ऑफ ऑनलाइन ऑनलाइन लर्निंग, राइट। अगर ऑफलाइन होता तो फरवरी में दुकानें बंद हो जाती हैं, किराया देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, पीपल विल नॉट बी एबल टू स्टे देयर, दे हैव टू गो टू देयर होम टाउन्स एक्सेट्रा। बट हियर आई कैन टीच यू इवन 1 वीक बिफोर द एग्जाम, इजंट इट? अगर आपका एग्जाम 31 मई को है, तो 23 मई को भी हम क्लास ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है उसमें, राइट। आप 1 घंटा निकाल लेना अपने बिजी शेड्यूल में से। तो भाई और बहनों, आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड इफ यू वांट टू टेल अदर्स अबाउट दैट करंट अफेयर्स कोर्स, इट इज स्टिल 3 months अवे, ऑलमोस्ट 80 days टू बी प्रिसाइज। तो 80 दिन के बाद लॉन्च होने वाला है, तो बता देना किसी को एनरोल करना हो प्लस में एक्सेट्रा। So what is this climate change? Is it see, we don't care about climate change. Is it absolutely clear? अर्थ में हमेशा climate change होता आया है, होता रहेगा, होता है। But the rate of climate change has been exponentially high because of anthropogenic climate change. Is it absolutely clear? पहले भी climate change होता था, हमेशा होता आया है, हमेशा होता रहेगा। कभी भी volcanic eruption अगर मेगा स्केल पे हो जाएगा तो climate change हो जाएगा। कभी भी अर्थ की एक्सेस थोड़ी टिल्ट मार जाएगी तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, कभी आइस एज आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो 99% of any species which ever existed on earth has already been gone. Is it absolutely clear? 99% of all the species which ever existed on earth is already extinct.
Do you understand? Such a powerful statement I am making here. So it means हम तो अभी आए हैं यार, 10,000 साल पहले से तो हमने इन्फ्लुएंस करना चालू किया है एग्रीकल्चर के थ्रू. Before that we hardly had anything. So I hope you will remember this. Okay, is it absolutely clear? So before we, what we actually care about is anthropogenic climate change, and because human beings have increased the pace of species extinction, and we have increased the pace of climate change. Is it absolutely clear? So difference between weather and climate is a measure of time. Is it absolutely clear? Weather and climate is just time. आज सुबह बारिश हो रही है, आज सुबह ठंड हो रही है, आज सुबह लाइट हो रही है, वो सब वेदर होता है. क्लाइमेट का मतलब होता है इंडिया इज अ वार्म कंट्री. Do you agree with this statement? India is a very warm country. On the other hand, if you want to say Canada is a cold country, isn't it? तो ऑब्वियसली इंडिया में भी ठंड पड़ती है. लद्दाख में चले जाओगे तो -25 -30 पे चले जाओगे. और अगर कनाडा में भी कुछ जगह गर्मी पड़ेगी, बट ओवरऑल कैन यू मेक दीज स्टेटमेंट? सो दैट इज बेसिकली क्लाइमेट. ओके, so weather is basically for hours, weeks, days, etc. It will change from day to day, from place to place. So for example, at one part of Jaipur can have weather as very bright, one part can have cloudy, one part can have rain. Is it possible that in Jaipur itself there are like three different weathers at the same time, literally at the same time? So answer is yes, it is very much possible. One part can be shiny, one part can be cloudy, one part can be rainy. But climate of Jaipur will not change on daily basis. Okay, so climate refers to the changes in the atmosphere for long period of time. Okay, let us discuss this. Now, ultimately, what is the source of climate? So answer is sun. Is it absolutely clear? What leads to all this climate, seasons, everything? Ultimate source is sun. Okay, because sun will send you some energy. Now, because of the tilt of the axis of the earth, there are other reasons also. I'm not denying that. But ultimate source is always sun. So sun ki इज्जत करो, respect करो sun को for that. So balance between incoming energy from the sun and outgoing energy from earth ultimately drives our climate. Is it absolutely clear? So balance between incoming energy from the sun and outgoing energy from the earth, absolutely ultimate तो यही reason होता है. अगर आप sun को हटा दोगे, earth will become very cold, damp place. Is it absolutely clear? वहाँ कोई weather नहीं बचेगा, कोई climate नहीं बचेगा, कोई season नहीं बचेगा. It will be a frozen ball. And धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका atmosphere होगा, that will start leaking into the outer space, and you will basically become like Mars. Okay, so Mars is also like that. Okay, नहीं, absolute zero temperature तो कहीं नहीं होता. पहली बात तो absolute zero temperature does not exist. But yeah, there is a new space movie in town. Those of you who are space fan, if you want to watch, जैसे देखी होगी इंटरस्टेलर, देखी होगी मार्शियन, देखी होगी. वैसे it's not that good, but it's Brad Pitt's movie. Yeah, so those of you who want to watch, it was there. So it's a decent movie, not like very good movie, but a decent movie. I would say it's a decent movie. So space fans will like it. Okay, लिख तो दिया सर नाम. So this law states that energy can be transferred from one system to another in many forms, but it cannot be created or destroyed. So that is the ultimate thing. Now what is climate change? So it's a change in the usual weather found in a place, right? So for example, पहले बारिश ही नहीं होती, फिर एकदम से बहुत बारिश होने लग गई. So that is an example of climate change. So it could be a change in any of the following factors: temperature, pressure, humidity, rainfall, wind. Okay, is it clear? So you have temperature, you have pressure, you have humidity, you have rainfall, you have wind. So all these are examples of कुछ भी इसमें से change हो जाए, but ultimately क्या है इसमें? Ultimately temperature and precipitation. So both of these are outcome. So temperature and precipitation. Rest all of things can change. It refers to changes in the long-term average of daily weather, long-term average, and it has to last for years and decades. Is it clear? So जब भी climate की बात करते हैं हम decades में बात करते हैं, जब weather की बात करते हैं तो हम days, hours, weeks में बात करते हैं. Okay, so climate change is the change in the earth's usual climate. Okay, so usual temperature, let's say at some place it's 20 degrees Celsius. Now it has been increased by 3 degrees Celsius. It's now 23. So that is not usual for that place, isn't it? So climate change is a change in the earth's usual climate, like usual temperature, rainfall, snow, etc.
Now, Earth's climate has changed throughout the history. Just in the last 7 lakh years, there are 7 cycles of glacial advance and retreat. Is it absolutely clear? 7 लाख साल में 7 बार ग्लेशियल एडवांस होता है, ग्लेशियर रिट्रीट होता है. So it clearly proves that climate change has nothing to do with human beings alone. Global warming can happen without human beings also. Species extinction can happen without human beings also, right? But we exponentially increase the pace. Abruptly, last ice age ended about 7,000 years ago, and this is the point where human civilization starts. Is it absolutely clear? The moment the ice age ends, that is the precise point when agriculture flourishes throughout the world and concept of civilization starts. Then Indus Valley civilization, Mesopotamian civilization, Egyptian civilizations, all this started just 6,000 years ago. Okay, so Egyptian civilization, Mesopotamian civilization, they are one of the oldest in the world. Indus Valley civilization came after that. Okay, so like Pharaoh, वगैरह, they existed like 5,000 years ago. Can you believe it? You are more close to Rome than Rome was close to Egypt. Just like let that line sink in once. Okay. So Romans जो होते थे 2000 years ago, Rome वगैरह, Italy जो उस टाइप का था, they are much closer to us than they were to the Egyptian civilization start. Can you even believe that? इतनी पुरानी है civilization, because they just existed 2000 years ago, and pharaohs etc. they existed like even 5,000 years ago. Can you believe it? 5,000 years ago, 5,000, 5,500 years ago. Okay. Anyway, so why did it start? Because we could do agriculture. So agriculture is the base of the modern civilization. Is it absolutely clear? Without agriculture, civilization cannot exist, because for civilization to exist, people need to stay at one place. For people to stay at one place, it needs to have basic food and water. And if you are hunter and gatherer society, there is no way civilization can emerge out of such a society, right? You have to stay at one place, you have to do occupation, you have to do some chores, etc. For that, agriculture has to make the building block of civilization. Agriculture was only possible in an era when there was no civilizational issues. Okay, so it marked the beginning of the modern climate era. So no ice age issues, and most of these climate change are attributed to very small variation in Earth's orbit that change the amount of solar energy. Is it absolutely clear? What is this called? What is this called? Change in the Earth's orbit. Which axis orbit is change hota rehta है Earth का? Which cycle is this called? Can anyone tell me? So it happens every year. Okay, every few years. So they are called as. Have you heard about Milankovitch cycles? I don't know if you heard about it or not. So it's called as Milankovitch cycles. So this is literally effect on Earth's movement on its climate. So that is called as Milankovitch cycle. So इसमें क्या होता है, अर्थ का जो चेंज होता रहता है. सो ऑर्बिट में हल्का सा इसेंट्रिसिटी आ गया तो ऑर्बिट टिल्ट हो गया, काफी कुछ होता रहता है, पढ़ लेना इसके बाद. ठीक है. दे आर कॉल्ड एज मिलानकोविच साइकिल्स. ओके, व्हाट इज मिलानकोविच साइकिल्स? इफेक्ट ऑफ अर्थ्स मूवमेंट ऑन अर्थ्स एटमॉस्फेयर is called as Milankovitch cycles on Earth's climate. Okay, so effect of the movement of the Earth on Earth's atmosphere and Earth's climate is called as Milankovitch cycle. Is it absolutely clear? See, एक तो होता है ऑर्बिट, आप समझ रहे हो, एक तो होता है ऑर्बिट अराउंड द सन, और एक होता है अर्थ की एक्सिस. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो अर्थ की जो एक्सिस होती है वो 22 से 24.5 के बीच में वेरी करती है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. So it can vary from like 22.1 to 24.5. Right now it is exactly in between. It is, कितना पढ़ते हो आजकल? ज्योग्राफी में लिखा रहता है ना 23.5. सुना है कभी इसको? तो ये काफी कॉमनली आपको देखा होगा, 23.5 लिखते हैं. एक्चुअली वो 23.4 होती है, बट ठीक है चलो इतना लिख देते हैं. So ये वेरी करती है. Is it absolutely clear? अरे this is Earth, right? So this is not like this. Earth is always tilted, isn't it? So Earth is slightly tilted. So this tilt can go this direction also, this direction also. I hope it is absolutely clear. So Earth is not like ऐसे नहीं होती Earth. Earth is like this, right? हल्का सा tilt होता है. So this tilt can vary like this. Okay, is it absolutely clear? So this variation is from 22.1 to 24.5. एंड अभी लिटरली बीच में है हम, इसलिए आपकी ज्योग्राफी की बुक्स में लिखा रहता है 23.5 डिग्री. अगर फ्यूचर वाले ज्योग्राफी वाले पढ़ेंगे तो हो सकता है 24.1 हो. एंड दिस साइकिल इज अबाउट 40,000 ईयर्स अगो. 40,000 ईयर्स की ये साइकिल होती है.
तो 40,000 साल में सर ये साइकिल चलती है. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? So 40,000 years mein you will see this cycle happening. Okay, I hope it is absolutely clear. So other than long term variation, there are short term variations also, like you have droughts, you have floods, you have El Nino, you have La Nina, etc. Okay, ये तो लॉन्ग टर्म वेरिएशन हो गई. मिलान कोविच साइकिल. एक सोलर फ्लेयर्स भी होती रहती हैं. ओके, सन को भी सन स्पॉट साइकिल बोलते हैं उसको. सन भी 11 साल में चमकता रहता है, कुछ कुछ हो जाता है उसको हर 11 साल में. ओके, बट दिस इज लाइक 40,000 ईयर साइकिल या 41,000 ईयर साइकिल डिपेंडिंग ऑन स्कॉलर टू स्कॉलर. Okay, so there are so many variation. Then how can you say that this change is because of human beings? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? हो सकता है मिलान कोविच साइकिल के कारण हो सकता है सन के कारण हो सकता है ऐसे जो हो सकता है कुछ और, राइट? हाउ कैन यू बी सो श्योर दैट दिस ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, isn't it? सो यही यही आर्गुमेंट लेके कई ग्लोबल लीडर्स जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, बहुत सारे लीडर्स इसी के आर्गुमेंट को, जो मैं आर्गुमेंट आपको बता रहा हूँ ना, एग्जैक्टली आर्गुमेंट कि क्लाइमेट चेंज तो होता आया था, होता है और होता रहेगा. क्लाइमेट चेंज के और भी 50,000 रीजन है. मिलान कोविच साइकिल हो गई, कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई फलाना हो गया, कोई सन फ्लेयर हो गई, कोई सोलर सन साइकिल हो गई, कुछ हो गया, राइट? सो दिस इज द सेम आर्गुमेंट विच दे यूज, दैट this is not anthropogenic global warming, this is just earth made global warming, this is natural global warming, और ये तो अपने आप रिवर्ट हो जाएगी. So predictability of long term fluctuations of climate change, it depends on the causes creating the climate change. So what are the causes of climate change? Let us discuss this. Okay, मयंक मदान पूछ रहे हैं, सर जी आपके साइंस एंड टेक कोर्स की तरफ पीडीएफ से काम चढ़ जाएगा क्या? मतलब डिपेंड करता है, मतलब आपको कितना आता है उस पे, आपने वीडियो देखे हैं कि नहीं, आपको समझ में आता है कि नहीं. सिर्फ पीडीएफ से तो काम नहीं चलेगा, फिर मैं जोकर की तरह क्यों बैठा रहता हूँ 1 घंटे तक. पीडीएफ पकड़ा देते हैं, आप अपने अपने आगे कर दो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड, वही पढ़ लेंगे लोग. ऐसे ही काम चलना होता तो फिर तो जो भी बुक्स आप खरीदते हो सारी बुक पढ़ चुके होते अब तक. बट आपको भी पता है कि 100 बुक आप लाइफ में खरीदने वाले हो अपनी जिंदगी में, 200 बुक खरीदोगे. अगर 200 बुक कोई बंदा खरीदता है अपनी जिंदगी में, तो 100 तो उसका बाहर का कवर तक नहीं खुलता, जो बाहर पन्नी लगी रहती है उसके, वो भी नहीं खुलती 100 बुक्स की, तो ठीक है. बाकी बच्ची 100 बुक्स का पहला पेज खुल जाता है और उस पर आप नाम लिख देते हो. ओके, रोमन सैनी बॉट ऑन 2011 2 फरवरी, ठीक है, और उसके नीचे साइन कर देते हो. उसमें से बचती है 50 बुक. 50 बुक का आप इंडेक्स पढ़ लेते हो, ठीक है, कि चलो भाई ये 4 5 अच्छा ये पढ़ा रहा है ऑथर. उसमें से जो बची 25 बुक, उसका आप जाके करके 2 3 पेज पढ़ते हो, और हार्डली आप 5 या 10 बुक उसमें से लाइफ टाइम में पढ़ते हो, ठीक है. 5 to 10% कंप्लीशन रेट होता है, isn't it? झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? आप जिंदगी में देख लेना, आप 200 बुक्स खरीदोगे और लिटरली यही होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको. तो क्या करोगे पीडीएफ का, सुन लो बस, वो बेटर रहेगा. सो तब ना अर्थ का एनर्जी बैलेंस है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, राइट? देखो, अगर 100 आती है इंसोलेशन, तो उसमें से 30 तो तुरंत स्कैटर हो जाती है. ओके, 70 अर्थ के अंदर आती है. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? अब उस 30 में से भी कहां से होती है? 6 इज स्कैटर्ड बाय एयर, 20 इज बाय क्लाउड, 4 इज बाय अर्थ सरफेस, 70 बेसिकली मेक्स इट इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? सो 30% तो सीधे उड़ गई सर आपकी, 70 वापस आई. So atmosphere and clouds, they absorb 19 units of this incoming solar radiation, and it leaves 51 units of solar radiation that is absorbed at Earth's surface. Is it absolutely clear? So 70 units of incoming solar radiation makes into Earth's atmosphere, and atmosphere and clouds, they absorb 19 units of this incoming solar radiation. Okay? 51 जो बची, so they is absorbed at Earth's surface. Okay? अब जो 51 बची, 23 units are used to evaporate water, 7 are used to process conduction and convection. Now this is a so important line, isn't it? Isn't Earth acting like a solar panel? Earth is literally acting like a solar panel, isn't it? सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करी, उससे पूरी वाटर साइकिल चला रही है, उससे पूरी एयर साइकिल चला रही है, विंड सर्कुलेशन हो रहे हैं, टेम्परेचर रिबैलेंसिंग हो रही है. और ऑब्वियसली दिस इज लिटरली व्हाट अ सोलर पैनल विल डू. इट विल एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, इट विल मूव द टरबाइन, isn't it? It will absorb the solar energy, it will move the turbine, it will be attached to some electricity like generator, and then basically the electricity will be generated. So chlorophyll is one form of converting the solar energy into usable form. This is another form of that. So remaining 21 units are emitted from our surface as outgoing infrared radiation, also called as terrestrial radiation. Okay,
So remaining 21 units are emitted from Earth's surface. So I hope you'll remember this. So Earth actually radiates 117 units from the surface. Okay. So I hope you understand, because solar radiation comes during the daylight hours, but our Earth also emits during the night hours, isn't it? So infrared radiation keeps on emitting during the night hours as well. And 6 of these 117 units are emitted into space beyond Earth's atmosphere. और एक बार अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चला गया कुछ, तो वो वापस नहीं आता अर्थ पे. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? That is why moon has lost its atmosphere. That is why Mars has almost lost its atmosphere. So most of these planets, they lose their atmosphere, unfortunately, the terrestrial planets. And that is why life does not exist on moon and Mars. Okay. Otherwise moon is literally like earth, right? Literally बाजू में ही तो है हमारे. उसका तो कुछ बोल भी नहीं सकते कि इट इज नॉट एट फार डिस्टेंस और गुड डिस्टेंस. तो लिटरली बाजू में 3 लाख किलोमीटर क्या होता है, एक दिन में जाके, 2 दिन में जाके वापस आ सकते हो आप. So just do this entire calculations, up to you if you want to do. So now let us say if you want to do, okay, why are they running after Mars? See, ultimately there are a lot of potential of Mars as compared to Earth. First of all, if there is any global level catastrophe, let us say some meteor comes to Earth, meteoroid, and strikes the Earth, so फिर moon की भी तो बैंड बच जाएगी उस केस में. I hope you understand that. So moon and Earth are like a very close system. अगर मून डिस्ट्रॉय हो गया तो अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती. ओके. सो इफ यू वांट, इफ द लॉजिक इज दैट the life should not get disturbed on earth, so then it is a very stupid logic to go just to the moon. I hope you understand that. So because let us say कोई एपिडेमिक फैल गया अर्थ के ऊपर, तो अर्थ से मून पे जाने में कितना टाइम लगेगा आपको सर? अगर कुछ 4-5 पागल लोग पहुंच गए, 2-3 दिन का ही तो काम है. और अगर हमारी सिविलाइजेशन और ज्यादा हो गई एडवांस, तो कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे मून पे, इजंट इट? एक नेवार्क से सिंगापुर फ्लाइट चलती है 19 घंटे की. ओके. नेवार्क करके एक जगह है, वहां से सिंगापुर की फ्लाइट है, सबसे लंबी फ्लाइट है आई थिंक दुनिया की. दैट इज 19 आवर्स फ्लाइट. ओके. उतनी देर में तो हमारी सिविलाइजेशन को मून पे पहुंचा देंगे फ्यूचर टेक्नोलॉजी में. ओके. सो लेट अस से इफ समथिंग गोज रॉन्ग, then moon is not a very pleasant place to do anything. I hope it is absolutely clear. Okay. That is why they go after Mars. की अगर कुछ हो भी गया तो 400 मिलियन माइल्स दूर है सर. 400 मिलियन माइल्स दूर है. ओके. So any factor which causes a change to Earth's energy balance is called as a radiative force. So a positive force is such which is produced by increasing concentration of greenhouse gas, isn't it? So anything, if you increase the greenhouse gas concentration, Earth will become like Venus. So Venus का temperature होता है 400-450 degree Celsius. Okay. So Earth can easily become like Venus if you just increase slight global warming. थोड़ा सा global warming कर दो. Okay. Have you seen Domino? वो यूट्यूब पे बढ़िया से वीडियो नहीं होते, एक को टक किया और बिल्कुल लाइन लग जाती है, गिरते 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 लाइन लग जाती है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ डोमिनो इफेक्ट. ओके. सो इफ यू इंक्रीज CO2 slightly, then it acts as a domino. Yeah, Venus is much hotter than Mercury. Obviously you should know all this. Without atmosphere you cannot stay hot. So negative forcing is which is produced by airborne particulates that reflect solar energy, which tends to cool the Earth's surface. Okay. Now it can be natural. Is it absolutely clear? I told you global warming can 100% be natural. We have discussed that. So no doubt in you. Or it can be man caused or human caused. It's called as anthropogenic. So natural causes includes continental drift, plate tectonics, sunspot, solar cycle, volcanoes, forest fires, earth strills, comets, meteoroids. Right? अगर कल को आपके कॉमेट या meteoroid आके टकरा गया, तो आपको पता है ना, पूरा का पूरा एक डस्ट क्लाउड कवर कर देगा अर्थ को, which will cut off the solar radiation and there will be an ice age. There will be an ice age if there is a huge meteoroid which strikes the earth. See, same thing happens with nuclear holocaust. Okay. Same thing will happen with volcanic eruption. Same thing will happen with meteoroid. Is it absolutely clear? न्यूक्लियर हॉलोकास्ट, वॉल्केनिक इरप्शन, मीटेओराइट. ऑब्वियसली देखो इंस्टेंट तो डेथ होंगी, राइट? अगर न्यूक्लियर बम कहीं फटेगा तो आजू बाजू में जो 2-3 लाख लोग होंगे वो तो इंस्टेंटली मर जाएंगे, राइट? सेम विद मीटेओराइट, सेम विद वॉल्केनिक इरप्शन. वो तो कोई डाउट ही नहीं कर रहा. बट उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा वो बता रहा हूँ. इट विल जस्ट कवर द क्लाउड, द डस्ट पार्टिकल्स विल कवर द अर्थ. इट विल कट ऑफ द sun.
and it will decrease the temperature on Earth, and the life as we know it will not exist. So these are the natural causes of climate change: continental drift, plate tectonics, sunspot, solar cycle, volcanoes, forest fires, earth tilt, comets, meteorites. Okay, ये अभी बताया था ना, मिलानकोविच cycle. Do you remember that? Again, these are like hardcore geography things, but I hope you'll remember this. 41,000 years में एक साइकिल होती है, और अर्थ की जो एक्सिस होती है वो 24.5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है, डिग्री तक जा सकती है 22.1 से. अभी जो है वो 23.4 23.5 इतनी है. ठीक है, इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? तो अर्थ ऐसे ऐसे टेढ़ी होती रहती है, ऐसे ऐसे. ठीक है, ऐसे ऐसे झूलती रहती है अर्थ, एंड उसका जो ऑर्बिट होता है सन के अराउंड वो भी चेंज होता है. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? इट इज एन इसेंट्रिक ऑर्बिट लाइक दिस, राइट? So it's not like कि सन बीच में होता है, सन यहाँ पे होता है. Is it absolutely clear? So sometimes we are close to sun, sometimes we are away from the sun. ऐसा नहीं सन बीच में हम उसके चारों तरफ गोल मार रहे हैं, ऐसा नहीं होता. And when is the earth closest to sun? When is the earth closest to sun? Which month? So answer is January. January is the point when the sun and earth are the closest to each other. Is it absolutely clear? तो कई लोगों को लग रहा होगा ठंड क्यों लगती है, फिर बाजू में है ये तो इतना पास में, तो भाई ठंड क्यों लगती है. सो अगेन आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन. अरे इट हैज नथिंग टू डू विद सन. मरकरी पे भाई माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता है, वो तो लिटरली बाजू में है. एटमॉस्फेयर, टिल्ट, एंगल, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट. ओके, आप सन के बाजू में जा सकते हो. इफ आई फ्रीज यू इन अ रेफ्रिजरेटर यू विल फील कोल्ड, राइट? डिस्टेंस, हाउ डज इवन डिस्टेंस मैटर? आपको सन के बाजू में जाके छोड़ दूंगा मैं, आई विल कवर यू विद द मेटल विच इज एब्सोल्युटली कोल्ड इनसाइड इट. सन रेज विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट इट, इजंट इट? जैसे पार्कर सोलर प्रोब है, डू यू थिंक इट विल हीट अप? Do you think it will heat up? Its systems will burn away? Obviously no. It will have a heat shield. The temperature will be in minus 270, minus 260, right? So distance, and this is stupid thinking. Space को थोड़ा आपको पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा. अगर सन आपकी तरफ आ गया, अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो सीधा टेम्परेचर 300-400 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा. ओके, और सन आपकी तरफ से चला गया तो सीधा टेम्परेचर -100 -200 पे जाके गिरेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. There is a huge fluctuation if you don't have an atmosphere. It's like if you are naked, if you don't wear clothes, if you don't have a blanket. अगर बाहर चले गए तुरंत ठंड लगने लग जाएगी, राइट? और अगर हीटर के सामने बैठ गए तो तुरंत गर्मी लगने लग जाएगी. बट if you are wearing clothes, if you have a blanket around you, neither you will feel too hot, neither you will feel too cold. Venus is so hot because Venus has global warming, greenhouse effect. So obviously continental drift and plate tectonics play a huge role in climate change, right? Depending on the land mass, how the ocean currents flow, सब कुछ वो तो goes without saying. मतलब सन स्पॉट्स, जैसा मैंने बताया, एवरी 11 years देयर इज अ सोलर मैक्सिमम. बताया ना मैंने आपको, हर 11 साल में एक नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑन द सन साइकिल्स ओवर टाइम दे रीच अ पीक. इट्स कॉल्ड एज अ सोलर साइकिल और सन स्पॉट. So they can cause intense magnetic activity, solar flares, and hot ejections can come from corona of the sun, and it affects the atmospheric phenomena of Earth like cloud cover, etc. Okay, so these changes in the solar energy output are considered very small. Okay, but they can do other things also, right? So anyway, we will discuss. ये सब हम डिस्कस कर लेंगे. मैंने आपको बताया था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन द इंटरेक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर. आप बताओ मेरे को इसमें कौन सा होगा. We will discuss all this, but it's a very simple answer. We will cover this, don't worry about it. इसमें क्या है? Commensalism, both species get benefited, is stupid. Emancialism, one species gets harmed, is absolutely fine. Predation में basically one species get benefited is not wrong, but other species also get harmed. So it depends on the interpretation of the examiner. Is it clear? Because just one species getting benefited is technically called as commensalism. Is it clear? Again, it depends on the interpretation of the examiner. I hope it is clear. So welcome to the world of UPSC. Now this is a typical question.
जिसमें एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो वेलकम टू द रियल वर्ल्ड, बिकॉज commensalism is technically where one species get benefited, okay. Predation is the phenomena where one species get benefited, one species get harmed. Is it absolutely clear? Now depending on the interpretation of the examiner, the answer can be 2 and 3 only, and 2 3 4 also, okay. I would 100% mark it depending on the interpretation. Is it absolutely clear? It doesn't matter what you mark, okay. It's like saying ki sunrise in the east and set in the west, okay. Technically speaking, there is no east, west, north, south. If you look from the space perspective, there is no east, there is no west. Second of all, earth does not rise or set, sun does not rise or set. Sun does not care about earth. Sun could not care less about earth. Sun just revolves around the bloody black hole inside the Milky Way galaxy every 225 million years. अब ऐसे छठी क्लास में मैंने बोल दिया था, टीचर ने लोड ले लिया था। तो अब डिपेंड करता है कौन सा इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्जामिनर की बात चल रही है, राइट। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, सो डिपेंड्स ऑन इंटरप्रिटेशन। So don't worry about these 2-3 questions, all right. Focus on the rest 95 questions. Is it absolutely clear? बाकी 95 questions पे फोकस करो। इसमें भी आप 50% एलिमिनेट तो कर ही दोगे जितना मैं पढ़ा। मून गेट डिस्ट्रॉय, व्हाई लाइफ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइडल एनर्जी। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? तो जो आपके साथ टाइडल एनर्जी है ना आपके इतनी, मून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। टाइड्स वगैरह मतलब केओस हो जाएगा आपका, ठीक है, पूरा अर्थ का सत्यानाश हो जाएगा। एंड दैट इज जस्ट वन पार्ट, वी विल डिस्कस अदर थिंग्स आल्सो। हाउ प्लेट टेक्टोनिक्स कॉज क्लाइमेट चेंज? अरे डिपेंड्स ना, कितना लैंड मास है, कैसे है, ज्यादा है, कम है, ओशन करंट्स, एवरीथिंग विल फ्लो अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विंड सर्कुलेशन ऑफ एरल सेल इज फॉर्म। वी विल डिस्कस। ज्योग्राफी क्यों पूछ रहे हो सर? अभी मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, फिर काफी बचा है, सॉरी अबाउट दैट, बट लेट्स फोकस। So volcanoes, so volcanic eruption causes outburst of gases and dust particles which block the incoming rays of the sun. Is it absolutely clear? Lot of gas, lots of dust particles. It cuts off your sun. Sun is not able to come out. Block हो जाएगा sun, तो obviously ठंडा हो जाएगा, right? Common sense है। By the way, सेम की सेम चीज आपको पता है, जब आपकी आग लगी होती है तो आप एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड छिड़कते हो ना उस पर, फायर एक्सटिंग्विशर। सो लिटरली सेम चीज करता है। सो जो आग लग रही होती है उसके ऊपर वो फैल जाता है, सो इट कट्स ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। लिटरली सेम चीज होती है, इट्स एब्सोल्युटली कट्स ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, एंड दैट्स हाउ द फायर कैन नॉट कंटिन्यू। हमने देखा इंस्टेंटली आग बुझ जाती है, विद इन फ्यू सेकेंड्स आग गायब हो जाती है इफ यू पुट दैट, बिकॉज ऑक्सीजन का एब्सोल्युटली कवर कर देता है। एंड दैट इज द अनदर रीजन व्हाई इफ यू आर बर्निंग, okay, if someone is burning around you for any reason whatsoever, just cover them very very tight. Either you can throw them in a water, okay, nothing like it, you can throw them in a water, okay, unless it's an electric burn, that's a different issue. Or if you don't have anything, then just cover them in blankets, okay, and cover them like really really tightly. Obviously damage has already been done, but it will prevent damages further, okay. ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग इज कि बर्न ना हो तो बेटर है, बट कई बार जैसे बर्न हो जाता है तो यू कैन कवर इट वेरी वेरी रैपिडली, आइदर डिप इट इन वाटर, दैट इज द फर्स्ट थिंग। व्हाट डज वाटर डू? सो वाटर आल्सो कट्स ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई कंप्लीटली, ओके। एंड सेकंड ऑफ ऑल, वाटर आल्सो हैव अ सूदिंग कामिंग इफेक्ट, इट विल कट, आप समझ रहे हो ना। सो वाटर में भी इट विल नॉट सस्टेन अनलेस इट इज एन ऑयल फायर। ऑयल में क्या होता है, ऑयल फ्लोट्स ओवर द वाटर, you know, right? Oil की density कम होती है तो it comes over the water, so water is not able to come over the oil. That is why oil will continue to burn on the water, because oil की density कम होती है, water की ज्यादा होती है। So that is why oil में काम नहीं चलेगा। अगर आपके तेल में आग लग रही है तो पानी डालोगे कुछ नहीं होगा। Is it absolutely clear? तो पानी उसके नीचे चला जाएगा। So कुछ कुछ थोड़ा देखना पड़ता है चीजें। Anyway, so blockage of insulation causes cooling of the weather. Optical properties of SO2 sulfate aerosols, so it creates a global layer of sulfuric acid haze. And eruption of Mount Pinatubo, Philippines in 1991, it decreased global temperature by about 0.5 degrees Celsius. Can you believe it? एक वॉल्केनिक इरप्शन ने 0.5 डिग्री सेल्सियस के लिए, पर 3 साल के लिए 0.5 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, ओके। कैन यू इवन बिलीव इट? सो इमेजिन अगर एक अच्छा वॉल्केनिक इरप्शन हम कर दें तो सारी ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, राइट? क्योंकि वहां से बढ़ने वाला है 2 से 4 डिग्री, एक वॉल्केनो ने 0.5 डिग्री कम कर दिया
तो कोई अच्छा साइंटिस्ट आएगा तो क्यों नहीं, मतलब कर दो बराबर. So that is how you have to think, sir. Okay. So although the volcanic activity may last only a few days, yet the large volume of gases and ash can influence the climatic pattern over the several years. Is it absolutely clear? Now, forest fires, so wildfires which are intensified by global warming, they exacerbate the global warming. Okay. सीधी सी बात है ना, आग लगाओगे तो फॉरेस्ट के अंदर जो कार्बन है वो बाहर जाएगा, उससे ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग होगी. ओके. सूट इज बेसिकली कार्बन, एंड कार्बन कैन ऑल्सो इंक्रीज द मेल्ट ऑफ स्नो, इजंट इट. एक तो स्नो को मेल्ट करवाओगे आप, ऊपर से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, तो डबल वैमी हो जाएगा. राइट, सो प्लीज रिमेंबर दैट. नाउ इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? अर्थ टिल्ट समझ में आ गया? लेट अस से अर्थ एब्सोल्युटली 90 डिग्रीज होती, तो डू यू नो, बहुत बुरी हालत हो जाती है आपकी. देन यू वुड बी लॉक्ड विद द सन, that one part will get extremely hot and one part will get extremely cold. Do you know that you will not be able to see dark side of the moon ever? It is impossible for the human beings to see the dark side of the moon. नहीं, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, वो जाके देख लो. मतलब उसमें क्या हो गया, मतलब फ्रॉम अर्थ, दैट वाज द राइट आंसर. इट इज इम्पॉसिबल टू सी फ्रॉम अर्थ. वहां तो जाके देख ही सकते हो. अभी गया तो था हमारा यान, वहां पे लैंड होते होते फाइनल लैंडिंग नहीं हो पाई अच्छे से, बट या. So I hope you understand. You can go there and see. It is very close, 384,000 kilometers. That's all. So Earth's obliquity, eccentricity. These are two different things. Is it absolutely clear? So this is sun and this is Earth. So depending on the eccentricity, sun यहाँ पे है या sun यहाँ पे है, कितना eccentric है, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है. Obliquity is this. So this is, if Earth is like this, then this is almost 90 degree, right? But Earth is technically like this. Is it absolutely clear? समझ में आ रहा हो? This angle I am talking about. Okay. So Earth can vary slightly like this and this. This entire degree variation is from 22.1. Okay. I hope you will not forget this. Is it absolutely clear? 22.1 to 24.5. Earth's obliquity, Milankovitch cycles. So please remember this, last for 41,000 years. Okay. यार कोई लेफ्ट और राइट कैसे हो सकता है, कैसी बातें कर रहे हो आप वहां पे. देर इज नो लेफ्ट, देर इज नो राइट, मतलब देर इज नो फ्रेम ऑफ रेफरेंस. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको. स्पेस में आओ सर, थोड़ा ऊपर उठो, लिटरल सेंस में ऊपर उठो. हैव यू सीन द वीडियो पावर ऑफ 10? सबने देख रखा है वो वीडियो पावर ऑफ 10? अरे यार मेरे साथ रह के नहीं देखा पावर ऑफ 10? क्या मतलब, जिंदगी में सबसे अद्भुत वीडियो है वो तो, लाइफ का. उसको तो देखना चाहिए दिन में एक बार, ताकि आपको पता चले कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है. अर्थ की तो कोई औकात ही नहीं है, सोलर सिस्टम की कोई औकात ही नहीं है, मिल्की वे गैलेक्सी का ही कुछ नहीं है, राइट. लिंक दीजिए सर. लिख तो दिया पावर ऑफ 10, जाके देख लो यार. हर चीज में लिंक लिंक चाहिए. चलो ठीक है, दे देते हैं लिंक, कोई बात नहीं. आप आए हो इतना पढ़ने. मात्र 8 मिनट का वीडियो है, तो इसको देख लेना, ठीक है. तो So I'm sharing the link with you guys. Our own cosmic. ठीक है. So can you see this link? See it after the class. अभी मत देखना. So comets and meteorites, they strike the Earth, also affect sea level, rainfall, temperature, ocean currents, atmospheric circulation, etc. All right. So if they strike, it can block out the sun, isn't it? I told you, right? So it can cause an impact winter because of the impact. And anthropogenic causes, this is starting especially since last 250 years, and that too in especially last 100 years. Okay. अगर बिल्कुल ही चालू हुआ था, देखो 250 साल पहले से ग्लोबल वार्मिंग में हमारा कोई रोल नहीं था, बहुत ही माइनर रोल था. लास्ट 250 साल में काफी बढ़ गया आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. So according to the most climate scientists, the chief cause of current global warming is increase in the greenhouse effect. So that is what people believe. And while greenhouse gas effect occurs naturally, it is the reason behind habitable condition on Earth.
Anthropogenic activities have led to an expansion in the greenhouse effect by adding greenhouse gases to the atmosphere. So Earth is also called as the Goldilocks planet. Okay, it is not too hot, not too cold, and the conditions are just right to allow life to flourish. Okay, ठीक है? So this is called as the Goldilocks planet. So basically, Goldilocks zone is a zone depending on the star. So where the conditions are neither too hot nor too cold for the life to exist. That is called as a Goldilocks planet. Okay. So why Earth is like this? So it is amenable because naturally arising greenhouse effect, which keeps the planet at a 15 degrees Celsius on an average. Is it absolutely clear? And a greenhouse effect is produced by a greenhouse gas. We'll discuss this. What is a greenhouse? So greenhouse का मतलब होता है glass walls and a glass roof, so which allows light to come inside, but it does not allow it to go out. Okay, so it stays warm inside even during the winter. So अभी I was seeing this greenhouse. So I was in अभी UK में था मैं अभी 10 दिन पहले. So there was a match going on between Manchester City and Manchester United. Okay. So सुबह में वो क्या कर रहे थे? There was a patch of grass which was broken. Okay. समझ रहे हो? स्टेडियम होता है तो उसमें पैच ऑफ ग्रास वाज ब्रोकन, तो उसको पूरा उन्होंने ग्लास के अंदर कवर कर रखा था. आप समझ रहे हो पॉइंट? सो इट वाज कवर्ड कंप्लीटली अंडर ग्लास सो दैट द ग्रास ग्रोथ कैन बी फास्टर. ओके, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आ रहा था क्या नाटक चल रहा है, बट बिकॉज हमने एनवायरमेंट पढ़ रखा है तो अपने को पता था कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू हेसन द ग्रोथ ऑफ द thing. Okay, so greenhouse gas stays warm inside even during the winter. So in the daytime, sunlight will shine into the greenhouse. It will warm the plants and air inside. And at night time, it's colder outside, but the greenhouse will stay pretty warm inside. Okay. No, Old Trafford में नहीं था. It was in Etihad Stadium. Recent match between Manchester City and United. It was in the City Stadium. Old Trafford is Manchester United Stadium. Anyway, so that's where you will see this greenhouse. There was a greenhouse there. Okay. So to increase the pace of the growth of the grass. So that's because the glass walls of the greenhouse trap the sun's heat. Okay. So very important. And the greenhouse effect is produced the same way on Earth as a whole. So I hope you understand. So this entire greenhouse, they act as a blanket. So Earth acts like the building and the gases in the atmosphere acts like the glass on the greenhouse. And the gases in the atmosphere trap the heat of the sun's rays within them to keep the Earth warm. And these heat trapping gases in atmosphere, they are basically called as the greenhouse gases. Is it absolutely clear? So they are basically called as the greenhouse gases. Now, what is this electromagnetic radiation? So these are the radiations coming in the form of electromagnetic waves. We have already discussed this, right? Gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, visible spectrum, infrared rays, microwave, radio wave, etc. Shorter wavelength, higher the frequency. Shorter wavelength, higher the frequency, more the energy. Okay. So highest frequency, shortest wavelength, highest energy किसकी होगी? Gamma rays की. Okay. So that you can remember. So if you can see gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, visible light, infrared, microwave, radio wave. So these are the strongest and these are the weakest. Okay. Now remember this line also. Color violet के beyond ultraviolet है, color red के beyond infrared है. Now sun का जो electromagnetic spectrum है, so 44% is within the visible light. Is it absolutely clear? So sun also emits all the radiations, but majorly half of it roughly is within the visible light. So that is why photosynthesis can happen on a planet like Earth. That is the only reason why photosynthesis occurs on Earth, because sun being like that. Okay, is it absolutely clear? So because sun is like that, so this varies from 400 to 700 nanometer. So that is called as PAR, photosynthetically active radiation. It is also called as the visible radiation. It is also called as the visible spectrum. So you can see this. So this is just the visible spectrum. Okay. So can you see 7% is ultraviolet? Is it absolutely clear? This is very dangerous to human health because it can damage your DNA. It can cause cancer. It can cause skin mutation. It can lead to destruction of plant growth, etc. And it mostly gets filtered by ozone layer. And these are harmless. Is it absolutely clear? Radio waves, microwave, these are harmless. They will not harm you. That is why you have radio in your house. That is why you have microwave in your house, and so on and so forth. All right. So once this is settled, so let us even move further.
So how does the greenhouse gas effect work? So sun's high temperature causes it to emit solar radiation of shorter wavelength. So incoming solar energy from the sun consists of shorter wavelength of energy, and 51% of the sunlight is absorbed at Earth's surface by land, water, and vegetation. Okay, so 51% of the sunlight is absorbed. Okay, so by the land, water, and vegetation. And some of this energy is emitted back from the Earth's surface in the form of infrared radiation. And because Earth is colder than the sun, it emits radiation at much longer wavelength, infrared, and it gets absorbed by the atmosphere also. So depending on this, okay. And these gases will emit the infrared radiation in all direction, outward towards the space, downward towards the Earth. And because of this, it is maintained at 15 degrees Celsius. Okay. I heard that sun is dying. Is that true? If yes, what will happen to Earth? So everyone is dying basically. There is no nothing like there's no news there. But yeah, we are dying quite faster. So don't worry about sun. It is there for next 4 or 5 billion years. You will not be there after 100 years. So without the greenhouse effect, Earth's average surface temperature would be only about minus 18 degrees Celsius, and the life as you know it will not exist. So 1% is basically argon, 0.95% करीब बैठता है. So why do greenhouse gas absorb heat? So they are much more complex than other gas molecules. They have a structure which trap heat. Major ones are CO2, water vapor, methane, and atoms are held together loosely enough that they vibrate when they absorb heat. That is the mechanism of how they can trap the heat. So eventually these vibrating molecules will release the radiation, which will likely be absorbed by another greenhouse gas molecule. And this process will keep the heat near the Earth's surface. Is it absolutely clear? So they vibrate, then they will basically keep it in the Earth. They will not let it go into the air. See, Earth is a system and space is another system. Okay. Either the heat can stay here or here. How does the exchange happen? Exchange happens through the sun. So if you remove the sun, Earth is a closed system. Okay. Earth का बस जाएगा, वापस कुछ नहीं आएगा. So it will become a one-way communication. It will be very, very bad for the life as you know it. All right. So that is something which you have to remember. ठीक है सर. सो आगे बढ़ते हैं. नाउ वाटर वेपर इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन ग्लोबल वार्मिंग, गोज विदाउट सेइंग, and it rotates in the atmosphere via hydrological cycle. Okay, so it is the biggest contributor in global warming. All right, water vapor is the biggest contributor in global warming. Is it absolutely clear? I have told you enough times. And it rotates in the atmosphere by hydrological cycle. So positive feedback is more greenhouse gas, more evaporation, more water vapor, more warming, more evaporation. Right? जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस होगी उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी, उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतना वाटर वेपर होगा, जितना वाटर वेपर होगा उतनी ग्रीन हाउस गैस होगी, उतना ग्रीन हाउस गैस होगा उतना इवेपोरेशन होगा. And this is basically a never ending cycle. All right. Now, carbon dioxide is a primary greenhouse gas. It is released through natural processes like respiration, volcanic eruption, right? But also through human activities like deforestation, burning fossil fuels, etc. And we have increased this carbon dioxide. And this is the main reason why global warming, as we know, is happening. Okay. This is the primary contributor to global warming. And this is the most important long-lived forcing of climate change. Okay. Now, what is methane? So methane is produced through natural sources, human activities, both. Natural sources includes wetlands, ruminant digestion of livestock, oceans, volcanoes, wildfires. And it is 20 times more potent as a greenhouse gas than CO2, but it has a very short lifespan. Right? Is it absolutely clear? So it is 20 times more potent, but it has a very short lifespan. So ultimately, CO2 is the major thing. Right? And nitrous oxide is even more potent, 300 times than CO2. Okay, so it is found through like fertilizers, etc., fossil fuel. And there are fluorinated gases like CFCs, HFCs, etc. So they also have huge, okay, they have very, very high global warming potential, but their absolute amount is less. So, for example, sulfur hexafluoride SF6 is 23,000 times more potent than CO2. Even when it is 23,000 times more potent than CO2, do you think that it will lead to more greenhouse gas effect? So answer is no, because CO2 is much more abundant than SF6. Okay.
Despite the fact it is 23,000 times more potent, still CO2 will have much higher greenhouse gas effect. And which is the most uh, like abundant gas? So answer is water vapor. That is why water vapor has the highest greenhouse gas effect. Okay. The CO2 is just 0.04%. Okay. Water vapor can go as high as 2-3% also. Do you know this? In some areas where humidity is very high, it can be 2-3-4% also sometimes. So depending on the like content of water vapor. तो पहले क्या होता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते थे, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होते थे, CFCs वगैरह होते थे, तो उनको तो हटा दिया हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंडर वियना कन्वेंशन में, और उनको हमने रिप्लेस कर दिया भैया जी HFC से. अब HFC वैसा है कि मतलब अच्छा तुम्हारी डेथ कार एक्सीडेंट में हुई कोई बात नहीं, कि कार एक्सीडेंट में नहीं मरेंगे बट छत से कुदा देंगे तुम्हें, आप समझ रहे हो. हाउ डज इट मैटर वेदर यू डाई फ्रॉम कार एक्सीडेंट और यू लाइक जंप फ्रॉम द हाउस, राइट? बोथ द प्रोसेस यू आर डाइंग. सो HFCs भैया नहीं नहीं हम नहीं करते ओजोन को ना, सवाल ही नहीं उठता. ओजोन, अरे ओजोन तो हमारा भाई है, ओजोन को कुछ कैसे कहते हैं, हमारा दोस्त है. हाँ हम ग्रीन हाउस गैस तो हैं, गर्म तो करेंगे यार, तो ओजोन को टच नहीं करेंगे. So basically, it is the same thing, right? It's the same nonsense. That is why you must have heard about other changes, Kigali, right? So it is the same nonsense. So HFCs turned out to be very potent greenhouse gas with very high green global warming potential. मुझे ये समझ में नहीं आता भाई, चेक करके ही भेज देते हैं, ऐसे क्यों एकदम से रिप्लेस कर दिए, चेक तो कर लेते. Now, black carbon is a pure form of carbon. It has a soot. It is emitted from incomplete fossil fuel combustion. ये PM2.5 PM उसमें काफी होता है. Significant portion is this. It is also a climate forcing agent. So it absorbs sunlight. It also, when it deposits on the snow and ice, it makes them black, right? स्नो पे अगर कार्बन जम जाएगा तो काला हो जाएगा, काला होगा तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो स्नो मेल्ट हो जाएगा, स्नो मेल्ट होगा तो डीप ब्लू ओशन में कन्वर्ट हो जाएगा, isn't it? So do you know fresh white snow has the highest albedo value of everything and naturally, and जब वो deep ocean में convert हो जाता है तो उसका color white से dark blue हो जाता है, और जब color white से dark blue हो जाता है तो वो फिर heat absorb करना चालू कर देता है ocean rather than reflecting. Okay. So it also affects rainfall pattern by disrupting the cloud formation, etc. Ozone is a relatively minor greenhouse gas because it is found in relatively low concentration in the troposphere, and it is produced by a combination of pollutants, mostly which are hydrocarbons and nitrogen oxide compounds. Okay, so that is seen mostly. Now, how the human activities disrupt the natural greenhouse effect. So initially we start small, but जैसा कि मैंने आपको बताया, डोमिनो इफेक्ट पता है ना आपको, एक बार टच किया और सारा बर्बाद हो जाएगा. So an imbalance in the overall energy budget can result if the concentration of the greenhouse gases increase. And if the concentration of greenhouse gases increase, then more infrared radiation will be absorbed and emitted back towards the Earth's surface. It will create an enhanced or amplified greenhouse effect. Okay. So if the concentration of the greenhouse gases increase, okay, all right, then more infrared radiation will be absorbed, more will be emitted. मतलब नॉन स्टॉप है, फिर डोमिनो इफेक्ट चालू हो जाएगा. अगर आपको कभी भी रट्टा लगाना है तो कैन यू सी दिस. So these are the 5 major gases. So CO2 through fossil fuels. This is CO2 through forestry and other land use. Then this is your methane. Okay. Then this is your nitrous oxide, and these are your fluorinated gases. So this is basically seen in your global greenhouse gas emissions. All right. Then this is by sector. So you can clearly see that heat production, electricity, and agriculture, forestry is a huge contributor, isn't it? So 50% is there through electricity, heat production, agriculture, forestry, other land use. So this is a huge contribution which you have to remember. All right, huge contribution. So a lot of people think agriculture, hey beta agriculture to jaruri hai khane ke liye, isn't it? But I hope you understand that agriculture is a huge contribution to water pollution, greenhouse gas effect, water consumption. So next time we have to do a sustainable agriculture. That is really important. Most potent greenhouse gas it is not. It is like जो आपके commonly आप पढ़ रहे हो उसके अंदर तो है, but not like otherwise. Right? We will discuss it later on. So water being a greenhouse gas cause more heat feeling in coastal area and summer. Is it so, sir? सो वहां पे डिफरेंट फिनोमेना होता है. देखो कोस्ट का तो फिनोमेना ही अलग होता है. कैन वी यूज दिस टाइप ऑफ पाई चार्ट एंड मेन्स आंसर? ऑब्वियसली दीज पाई चार्ट्स आर फॉर मेन्स आंसर. अदरवाइज इसकी एप्पल पाई बना के खाओगे थोड़ी, मतलब मैं तो पाई चार्ट बना ही इसलिए रहा हूँ ताकि
एग्जामिनर को आगे वहां पे आप लिख के आओ उसका, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय कंट्री, देखो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको इसमें। ऑलराइट, सो चाइना, यूएसए, इंडिया हर जगह टॉप 3 में मिलेंगे आपको, ठीक है। बट कैन यू सी दैट यूएसए की पॉपुलेशन हमारी 25% है, बट जो उनका एमिशन है सर, वो मतलब 4 से 5 गुना पॉपुलेशन है इंडिया की, रिलेटिवली स्पीकिंग 4 टाइम्स। उनकी 30 करोड़ है, हमारी 130 करोड़ है। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? 4 to 5 टाइम्स का फर्क पड़ता है, बट उनका फिर भी एमिशन 2.5 गुना है। तो इट इज सेड दैट एवरेज यूएस सिटीजन 10 times more CO2 emission, carbon footprint than any other one. I hope you understand this. So there are huge disparities. Okay, top 15 countries generate 72% of CO2 emission. Rest of the world's 180 countries produce just 28%. Okay, बाकी 180 कंट्री उतना प्रोड्यूस करती है जितना चाइना अकेला करता है। कैन यू बिलीव इट? सो चाइना इज डबल द एमिशन ऑफ सेकंड प्लेस। 180 कंट्री एक तरफ, चाइना एक तरफ। Now, what are the global warming potential? So this is relative to carbon dioxide. Okay, अगर 1 ton of gas absorb हुई relative to the emission of 1 ton of CO2, तो उसमें कितना होगा? तो we will discuss that. So time period is through 100 years. So larger the global warming potential, more a given greenhouse gas will warm the earth compared to CO2 over that time period. All right. So larger the greenhouse global warming potential, more a given greenhouse gas will warm the earth compared to CO2 over that time period. So usually it is given over 100 years. So some countries like USA will use the 100-year global warming potential. Okay. So let us discuss this finally. There is, can you see CO2 तो obviously 1 ही होगा, isn't it? CO2 तो 1 ही होगा, तभी तो reference है वो. So methane on the other hand is 56 times, 21 times. N2O is around 300 times. All right. So just remember this. How do you measure climate change? So it is measured through various things like Earth orbiting satellites. They can do present day weather, but paleoclimatology data from natural sources like ice cores, tree rings, corals, ocean, lake sediments, etc. So all these are example of climate change, and these records will provide a comprehensive look at long-term changes in the Earth's atmosphere, oceans, land surface, frozen water systems, etc. All right, and scientists will feed this data into the climate models, which will predict the future climate trends, and it will have a great accuracy as well. Okay, so this is very, very important. Sir, when Earth is near to Sun in January, why winters on Earth? I just told you it depends on the axis, right? The closeness and far will does not matter. Depends on other factors. We'll discuss this later on. How will practicing veganism help in climate change? Claimed that agriculture itself contribute majorly. So basically, agriculture definitely contributes, but the same agriculture is also used to produce then meat. So it becomes double whammy. All right. So agriculture indeed is needed, but जो आपके जो meat generation industry होती है, that is dependent on this agriculture a lot. All right. So remember that fact. Anyway. So ice cores from Antarctica are incredibly helpful in showing how the climate changes over time. So they can provide a record of what the level of greenhouse gases like CO2, methane were in atmosphere. And ice core data will stretch back 8 lakh years and will show that concentration of greenhouse gas in our atmosphere never increased. All right, so that will clear cut give you data that whatever is happening, it is happening because of the interference of the human beings. All right, so that will give you a clear cut data. Okay. So it will give you a clear-cut data, 8 lakh years, concentration of greenhouse gases in our atmosphere. So that is like indeed very, very important. And trees store information about the climate in which they are rooted. And each year tree will grow thicker, it will form new rings. And in warmer, wetter years, the rings are very thicker. All right. So इससे भी आप बता सकते हो pollen, particles, all this can tell you about the information of air at that particular time, water at that particular time, etc. So different information basically can be done, and inference can be drawn. All right. So sediments by pollen particles, dead creatures falling to the bottom of oceans. So there are different measure to basically take care of the climate change. Okay. So I hope this answers your question that if you are basically consuming the plants. So have you heard about this rule of 10%?
So if you, let's say if you consume meat, that's what you are referring to, right? So meat will even generate, like it will need even more. So just 10% of the energy will get transferred to this meat. So higher up you are there on this hierarchy, so more damage you will give to the climate. So this is a generally an understood phenomena that if you consume plants, it is relatively better. But again, like science is still out there. It's not like absolute consensus. ऐसा कुछ नहीं है कि this is it or this has to be done and so on and so forth. Okay. So इसका आंसर ज्योग्राफी में आपको क्लियरली मिल जाएगा, बट द लिमिटेड पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट यू डोंट नीड टू बी क्लोज और फार फ्रॉम द अर्थ to do anything like that. Okay. So सब पॉल्यूशन किससे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल से, डीजल व्हीकल से? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने को भी तो पॉल्यूशन होगा. सो मुकेश, यू आर राइट दैट पॉल्यूशन विल बी देयर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑल्सो, बिकॉज द वे यू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो मैटर्स, राइट? बिल्कुल सही बात है, एंड आई एम नॉट डाउटिंग यू वन फॉर वन सेकेंड. यू आर एब्सोल्युटली राइट. But eventually the generation of electricity can be done through solar, right, which is almost pollution free. It can be done through wind also, which is almost pollution free. Almost is the keyword, because pollution, you cannot eliminate pollution by any stretch of imagination. It is impossible to eliminate pollution just like that. Okay. But yes, overall it will reduce for sure. Okay, there is no doubt in my head. So overall it will reduce. All right. सो एंड इवेंचुअली फ्यूचर इज दिस, राइट? अब वही बात हो गई, सर कंप्यूटर इतना महंगा है सर, 1960 में सर कौन खरीदेगा? क्या है, गधा इन्वेंशन कर दिया आपने 1990 में. अरे सर ये मोबाइल फोन कौन खरीदेगा सर, इतना महंगा है सर, चलता तो है नहीं, बैटरी है नहीं इसकी, रखना पड़ता है, नेटवर्क आता नहीं है, टावर आता नहीं है, वीडियो चलते नहीं है, 8 GB है नहीं, बात हो नहीं पाती, इससे तो लैंडलाइन है. लैंडलाइन आने से पहले सर ये क्या इन्वेंट कर दी? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज व्हाट हैज बीन देयर फॉर एवर एंड एवर. दिस इज हाउ ह्यूमैनिटी प्रोग्रेसेस, राइट? अरे सर ये क्या लैंडलाइन लगा दी सर, कॉल तो लगती नहीं है, और 5-5 मिनट वेट करना पड़ता है ट्रंक कॉल पे, एक्सेट्रा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. राइट. सो देर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज. सो आई होप यू एंड सो आई स्कोर्स, ये सब कुछ हम डिस्कस कर ही चुके हैं अच्छे से. वी हैव डिस्कस दिस. राइट. तो और बताओ, और कोई डाटा है, किसी तरीके का परेशान है तो we can discuss that also. If there is anything else which you want me to cover, yeah, PDFs, I'll upload all the PDFs of environment and ecology, so you don't need to worry about that. Okay. So वो अपन कर लेंगे, PDF अपलोड कर लेंगे. और जो मेरा ये करंट अफेयर्स का कोर्स है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना. So that is extremely important for all of you. So what we'll do in this course is that we are going to cover a lot of topics of last 2 years. तो अप्रैल 2018 से अप्रैल 2020 के बीच में जितने भी अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उसको सारा A to Z कवर कर लेंगे इसको. ठीक है, तो उसको आप सब्सक्राइब करना मत भूलना. उसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको दिया था. ओके. सो और किसी को भी बताना है तो बता देना कि they can subscribe, and it will be really beneficial because MCQs पढ़ेंगे, डायरेक्ट है, उसमें कुछ ज़्यादा परेशानी की बात भी नहीं है, राइट? सो we will discuss this. Okay. So any other doubt if you have, you can ask me, but do go through these PDFs quite often. All right. तो उसको अच्छे से पढ़ोगे आप तो समझ में आएंगी चीज़ें, वरना उतने अच्छे से, क्योंकि इतना सारा कंटेंट हो जाता है तो फिर एकदम से सर पे लोड आ जाता है, राइट? सो आई डोंट वांट यू टू गो अंडर लोड, एंड धीरे धीरे पढ़ते रहना. वी हैव कवर्ड लाइक 15-16 टॉपिक्स टिल नाउ, so you can just go through these PDFs, etc. And I hope you are understanding these points. They are extremely critical for you to understand, and it will help you crack the exam basically. Okay guys. So ऐसे राइटिंग का भी मेरा एक कोर्स चल रहा है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो. सो दैट इज ऑल्सो ग्रेट कोर्स, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि 15 घंटे उसमें आपने मेरे से पढ़ाई कर ली. सो दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक एनीथिंग अंडर द सन रिगार्डिंग एसे. तो उसमें भी आप 150 नंबर ला सकते हो. ठीक है. एथिक्स भी पढ़ा दो सर, रोटी बनाना भी सिखा दो सर, फिर मोमोज कैसे बनाते हैं वो भी सिखा दो सर. मतलब यार ठीक है, मतलब मैं पढ़ा दूंगा. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट इट. अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो. करंट अफेयर्स, MCQs, एनवायरनमेंट, ऐसे राइटिंग, 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आंसर राइटिंग, साइंस एंड टेक. ओके.
Anyway, so we will discuss this. I hope you enjoyed today's class, and it was wonderful teaching all of you. So thank you and have an awesome day, and take care and good night.